रहे हो तो एडजन कर देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ लीजिए, यदि नहीं आ पाए एडजन कर देंगे। Lordship, this petition is by defendant, Lord. Defendant number 18 and 19, Lord. Against the order, Lord. The order will start from page number 20, Lord. 24 to 2020, Lord. By which the learned court has struck up the defense by way of submitting written statement, Lord. My application was rejected, Lord. इसमें अभी क्या है, वादी साक्ष्य के लिए लगा हुआ था पिछली बार, जो स्थिति थी वही आज भी है, वो उसी में चल रहा वादी साक्ष्य। बताइए ना क्या मैटर है। 2020 से 4 साल तो हो गए। सूट वाज फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट में लगा हुआ है। हाँ, उसमें क्या हुआ, कई लोग एक्सपायर हो तो 22/3 22/4 के आवेदन में ही अभी चल रहा। अभी स्टे भी नहीं था फिर भी। हाँ, ये प्रोसीडिंग चालू है महिला, पर वादी साक्ष्य अभी हुई नहीं। सूट मिला दे, बताइए मैटर क्या है। The suit is filed for title declaration and permanent injunction by them, Lord, and also declaring shall deed, Lord, certain accused, Lord. The shall deed in favor of me, Lord, that has also been. You are defendants. हाँ, 18 and 19, Lord. ठीक है, क्या हुआ, आप किस ऑर्डर के खिलाफ आए हैं? हम आए 24/2/2020। पेज नंबर 20, Lord, 20 से स्टार्ट। Knowing the notice of the court, Lord, though these defendants appeared before the learned trial court and engaged their counsel. किस डिफेंडेंट ने जवाब दावा दे दिया था? आप तो 18 और 19 है ना? 18, 19 क्या है आपका राइट? हमारी सेल डीड को भी इन्होंने चैलेंज किया है। आई हैव फाइल्ड द प्लेंट मेमो आल्सो, ब्लॉक। डिफेंडेंट नंबर 12 हैज एक्यूटेड सेल डीड इन फेवर ऑफ मेम, ब्लॉक। That is also in the prayer clause of the plaint and the para 15 of the memo plaint, Lord, which I have. आपका जवाब का अधिकार 29/8/19 को समाप्त हो गया। हाँ, समाप्त हो गया 29/8/19 को। जी। And thereafter, Lord, 29/8/19 को आपका समाप्त हो गया। 19/9/19 को क्यों आए कोर्ट में आप? ये लॉर्डशिप, जब हम thereafter, Lord, I moved an application, Lord, along with my written statement that it may be taken. आपने जवाब दावा पेश कर दिया है क्या कोर्ट में? हाँ, दे दिया है, लेकिन that has been rejected. जवाब दावा रिकॉर्ड पर लग गया। हाँ, दे दिया। तो आपने आपको एक्सपार्टी कर दिया था क्या? कहाँ है एक्सपार्टी करने वाला ऑर्डर? नहीं, एक्सपार्टी तो नहीं किया है। आपको एक्सपार्टी नहीं किया? नहीं, जवाब दावे का राइट जवाब दावे का राइट एक्सपार्टी क्यों नहीं किया? नहीं, एक्सपार्टी तो नहीं किया। काउंसिल वेयर अपीयर्ड। अच्छा, काउंसिल वाज नॉट फाइल्ड। हाँ, जवाब दावा। और इशू कब बने थे? इशू अभी तो हुआ नहीं, ट्रायल के लिए। नहीं, पहले इसमें कई सारे लोग हैं, कई बात प्रतिवादियां, तो इशू तो बन ही गए होंगे। बना होगा। इशू कब बने थे? That is not on record, Lord. That is not on record. As such, there are several. Not on record. You are hearing for you are here on behalf of respondent number 18, defendant number 18. आप करो ये. This is not on record. This is for you to bring all this on record. My Lord, that is. बताइए आप मेरे को, यदि आप रिकॉर्ड पर नहीं है तो ओरली तो बताइए। Order sheet is there, Lord. That is from. P1 इंटीम डॉक्टर के साथ किसका जवाब दावा पेश नहीं हुआ इसमें? इन्हीं का 18-19 का हो गया, बाकी लोग और सभी का हो गया था। जवाब दावा इन्होंने पेश किया एप्लीकेशन के साथ। वादी साक्ष्य अभी शुरू हुई है? नहीं, वादी साक्ष्य नहीं हुई अभी। ले लें रिकॉर्ड पर जी। नहीं तो अब इनको एक्सपार्टी नहीं किया, जवाब दावा एक्सपार्टी नहीं किया, जवाब दावा इन्होंने बाद में पेश किया। जवाब दावे का इनका राइट समाप्त हुआ था जी। 18 ये अपना इनका जवाब दावे का राइट समाप्त हुआ था 29/8/19 को। 29/8/19 से इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की जवाब दावे के साथ, कि कोर्ट ने स्वीकार नहीं। कब? 29/8/19 को इनका राइट समाप्त हुआ। उसके बाद उसकी ऑर्डर शीट्स कहाँ है?
लगी तो है रिकॉर्ड पर, आपका पन्ना पलटना नहीं जानते? ये 24/2/20 को डिसाइड किया कोर्ट, पेज नंबर 19 20 में है वो जो डिसाइड किया है। और 30/8/19 को एप्लीकेशन तो पहले हमने दिया, फिर उसका जवाब भी लिया इनसे। ये 24/2/2020 को उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी उसको कोर्ट ने डिसाइड किया है। नहीं, 24/2 को ऑर्डर हुआ है। हाँ, पर एप्लीकेशन तो पहले ही थी। इसमें 29/8/19 को एक्सपायर कौन हो गया था? उन्होंने 22 दिन का जवाब दिया था। बाईस दिन किसके संबंध में दिया था? वादी के संबंध में दिया होगा जी। वादी कब एक्सपायर हुआ था? 151 की एप्लीकेशन के साथ में लगा। ये कमलेश्वर अश्विनी जो है 9/10/19 को 9/10/18 को वादी कमलेश्वर प्रसाद ही एक्सपायर हो गए थे, तो इनका जवाब दावे का राइट समाप्त हो सकता था क्या? एक तरफ वादी एक्सपायर हो गए और इधर कोर्ट इनका जवाब दावे का राइट समाप्त कर रही है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है 29/8/19 को 22 दिन का जो है जवाब पेश करने के लिए समय चाहा जा रहा है। इनका जवाब दावे का राइट समाप्त हो गया। जी जी। जब ये एक्सपायर हो गए थे तो दूसरी कार्रवाई कोर्ट कर क्यों रही थी? अच्छा, ये जो है आपने वो आवेदन कौन सा लगाया था जवाब दावा रिकॉर्ड पर लेने का? 151 की एप्लीकेशन लगाया था सर। कब लगाया था? T2 ये लगाया है 21/10/19 को। ऑर्डर शीट में भी है सर। 21/10/19। जी हाँ, ऑर्डर शीट में भी है। ये पेज नंबर 17 से स्टार्ट है। लास्ट में प्रतिवादी क्रमांक 18/19 की ओर से एक आवेदन पत्र प्रकरण आज सुनवाई के लिए जाने बाबत पेश किए जाने गया आवेदन में दर्शित कारण उचित न होने से आवेदन 21/10/19 वाला आवेदन उन्होंने हाँ ये 17 नंबर पेज में आया है सर। 18/19 की ओर से आवेदन पत्र 151 सुनवाई की प्रॉब्लम है क्या? वाकई प्रॉब्लम है आपको ऐसा लग रहा है? 21/10/19 का जो आवेदन था वो कब स्वीकार हुआ, वो कब खारिज हुआ? ये 24/2। ठीक है, 24/2/20 के खिलाफ आए हैं आप? हाँ, 24/2/20 के खिलाफ। आप किस के लिए मिस्टर शुक्ला? मैं माय लॉर्ड रिस्पोंडेंट नंबर 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 16 प्लेंटिफ्स के लिए होंगे ना? प्लेंटिफ्स। जी। इसमें भी वेकेंट मैनर में अपील हो रहे हो क्या आप? सभी प्लेंटिफ्स के लिए नहीं हो? नहीं, जिनका पावर हो। नंबर सुन लो इनके, बोल दो नंबर। रिस्पोंडेंट नंबर 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 16 ये सब प्लेंटिफ्स है ना? जी। पब्लिक प्लेंटिफ्स कर रहा है। और अग्रवाल साहब का लिख दीजिए 133030। आप महावीर जी और इनका राजेंद्र श्री महावीर जी एंड श्री राजेंद्र पटेल petitioners कर दीजिए। हाँ, this miscellaneous petition has been preferred by the petitioners / defendants 18-19 challenging the order dated 24/2/2020 passed by कौन है ये? सेकंड सिविल जज क्लास 2 मऊगंज डिस्ट्रिक्ट रीवा इन सिविल सूट नंबर 201A/18 201/18 whereby trial court dismissed the application under section 151, dismissed the petitioner's apostrophe var application under section 151 CPC with the prayer for taking the written statement on record. Next, learned counsel for the petitioner defendants
18-19 submits that despite death of plaintiff Kamleshwar Prasad, जी trial court wide order dated 29/8/2019 without deciding the pending application under order 22 rule 3 CPC first closed right of return statement, however on 21/10/2019 21/10/2019 the petitioners by filing an application under section 151 CPC filed return statement and prayed for taking the same on record. आपने इसका खंडन किया, आपने कोई जवाब देके अपोज किया था क्या इसको? जवाब तो नहीं, रिटर्न में उसको which was not opposed, उसमें oral which was not opposed by the plaintiffs even which was not opposed by the petitioner plaintiff by filing return reply, despite this trial court has by the impugned order dated 24/2/2020 has dismissed the application under section 151 CPC. List of learned counsel further submits that that after closure of right of defendant, right of return statement of petitioners, the trial court also allowed the application under order 7 rule 14 within bracket 3 CPC filed by the plaintiffs and permitted the plaintiffs and wide order dated 11/2/2020 permitted the plaintiffs to file certain documents on record. In such circumstances and in view of the fact that plaintiff's evidence has not yet commenced the application under section 151 CPC for taking the written statement on record is has to be allowed. Learned counsel appearing for the respondents plaintiffs supports the impugned order and prays for dismissal of the miscellaneous petition. Her learned counsel for the parties and peruse the record. Perusal of order sheets placed on record by the petitioners shows that on the date when right of written statement of the petitioner was closed, the case was fixed for consideration of application under order 22 rule 3 CPC filed by the plaintiffs due to death of plaintiff 1 Kamleshwar. Order sheet
dated 19/9/2019 reflects that the trial court on the basis of pleadings of the parties framed issues and on 21/10/19 the petitioners moved an application under section 151 CPC for taking the written statement on record filed on behalf of the defendants 18/19, and just on the next date, that is on 23/10/2019, the plaintiff moved an application under order 7 rule 14 within bracket 3 CPC for taking certain documents on record which was allowed wide order dated 11/2/2020, and plaintiffs were permitted to bring certain documents on record. And just immediately thereafter, on 24/2/2020, the trial court dismissed the application under section 151 CPC, and prayer made on behalf of the defendants 18/19 for taking the written statement on record was rejected. Next, Maganna, in view of the aforesaid state of affairs, in my considered opinion, as the evidence of the plaintiffs has not commenced from the trial court, instead of rejecting the application under section 151 CPC, ought to have allowed the same and taken the written statement on record. So resultantly, miscellaneous petition succeeds and is hereby allowed, and by setting aside the impugned order dated 24/2/2020, the written statement filed by the petitioners / defendants 18/19 on is hereby taken on record, with the further direction to trial court to proceed further in accordance with the law. Take into consideration the written statement of the defendants 18/19, and if deems necessary, shall frame the requisite issues, and only thereafter shall proceed with the suit. Pending application. तेरा पासवर्ड हो गया क्या? पासवर्ड नहीं हुआ, तो मैं 10:30